Good evening to all of you. Is this audible? Audible, visible, everyone? All clear? ठीक अच्छी ऑडियो वीडियो. All right. So गत काली क्लास रे हमें स्टार्ट करथिले डिस्कशन ऑन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. Money market and capital market. These are the part of financial market. These are the part of financial market. ठीक अछि. So I hope everyone is clear about these two concepts. आज क्लास रे हमें देखिबा एक्सटर्नल सेक्टर. So just a recap. जस्ट रिक्याप बहुत स्टूडेंट कर क्वेरीज थिला कि सर फाइनेंशियल मार्केट डिफिकल्ट लागुची तो या ऊपर क्लास नियंतु. ऑलरेडी क्लास नहीं थिली काली मध्ये बहुत स्टूडेंट कहथिले कि किछि इंपोर्टेंट प्रोविजन सर आउ थरे कहि देबे टिके. सो फाइनेंशियल सिस्टम रे हमें देखले कोन इंपोर्टेंट आम पई. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम ना फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विस रो एग्जांपल कोन मो कोई फाइनेंशियल सर्विस रो एग्जांपल होउची लोन. लोन होउची गोटे फाइनेंशियल सर्विस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक मो कोई बैंक और एनबीएफसी. Financial market like capital market, or we can talk about money market. Financial instruments like bond, share, इस बोले कौन ना, these are financial instruments here. Okay. So commercial bank मानक ऊपर हमें पढ़िथिले काली क्लास रे. commercial bank कौन देखिले commercial bank रे ना, there are different types of commercial bank. कौन different types of commercial bank सबुठु दीटा important category देखिले हमें scheduled commercial bank एवं non scheduled commercial banks. Now what is the scheduled commercial bank? Which is mentioned in the second schedule of RBI Act. Which is mentioned in the second schedule of RBI Act 1934. या एक्ट सेकेंड शेड्यूल जोटा मेंशन है ताको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोली कहूछ. एंड व्हिच आर नॉट हियर दे आर कॉल्ड द नॉन शेड्यूल बैंक्स. जो माने एठी कवर रही नांदी ताको नॉन शेड्यूल बैंक बोली कहा जाय. देन व्हाट इज द डिफरेंस हमको कोन देखिया मिलछि. सेकेंड शेड्यूल बा शेड्यूल कमर्शियल बैंक एवं नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक इमरजेंसी टाइम पीरियड रे ड्यूरिंग देयर emergency situation रे both scheduled commercial bank and non scheduled commercial bank माने कौन करि परिबे. they can take money from RBI, can borrow from RBI. they can borrow from RBI हैला. now general समय रे normal situation रे only scheduled commercial bank can borrow. non scheduled commercial bank they cannot borrow. only scheduled commercial bank they can borrow and non scheduled commercial banks they cannot borrow. हैला बुझियला difference clear. so they are not listed in the second schedule of RBI Act 1934. इटा हमें देखिथिले. चलो एबे आसी जिबा हमें एक्सटर्नल सेक्टर. हां मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिफरेंस जो माने पचारथिलो. मनी मार्केट ता कोन बा, दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड. मनी मार्केट ता शॉर्ट पीरियड पई थिला एवं कैपिटल मार्केट ता फॉर लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग टर्म. कैपिटल मार्केट कौन पे, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग पीरियड.
नाउ एक्सटर्नल सेक्टर बुझा पूर्व गोटे छोट कॉन्सेप्ट बुझा दरकार जहाँ कहते ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी कौन, लेट्स से ये गोटे कंट्री, ये गोटे इकोनॉमिक सिस्टम जो ये अदर कंट्री मान सहित यार ट्रांजैक्शन अच्छी माने ये कंट्री रु बाहर को गुड्स एंड सर्विसेज जाऊ जहाँ एक्सपोर्ट कहा जाए और बाहर से कंट्री भीतर को गुड्स एंड सर्विसेज आसको इंपोर्ट कहा जाए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, of goods and services when it is allowed ताल ताको कौन कहूचे, that is called open system or open economy. When it is not allowed then that is called a closed system or a closed economy. कौन कहली, when it is not allowed that is called a closed system or closed economy. Now open economy रा concept रे when we talk about import and export that is called external trade. ताल कौन कहली, external sector it is all about export and import of goods and services, not only goods and services but also financial capital. कौन कहली, export and import of goods services and financial capital जेतल हुए ताको हम कहूचे external sector. Now clear what is the external sector. Now को प्रोडक्ट गोटे कंट्री एक्सपोर्ट करिवो ना, कंट्री एक्सपोर्ट्स द प्रोडक्ट where it has advantages, where it has advantages बुझिला. सो इंपोर्ट करिवो केतो ना व्हेन यू हैव शॉर्टेज, ताले इंडिया कोन एक्सपोर्ट करूची ना, इंडिया एक्सपोर्ट करूची एग्रो प्रोडक्ट्स. इंडिया कोन एक्सपोर्ट करूची ना, इंडिया एक्सपोर्ट करूची एग्रो प्रोडक्ट्स. एग्रो प्रोडक्ट रे इंडिया रा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जदि हम कहबी देन मैंगो, देन ग्रेप्स, इंडियन ओनियन है ना, इंडियन ओनियन ये सब इंटरनेशनल मार्केट रे बहुत अधिक डिमांड. देन शॉर्टेज जो प्रोडक्ट कौन आम इंपोर्ट कौन करुचे ना, मुझे कहबी कंप्यूटर हार्डवेयर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स, कौन कहली केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सब गुड़ा आम कौन करुचे इंपोर्ट करुचे इंडिया. अच्छा एग्रो प्रोडक्ट बेट तो आउ कौन ना, आयरन ओर एवं अदर ओर्स आम एक्सपोर्ट करुचे. डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज इंडिया मध्ये एक्सपोर्ट करती लाइक आईटी एंड आईटीईएस सर्विस. कौन कहले आईटी एवं आईटीईएस सर्विस को आम एक्सपोर्ट करुचे फॉरेन कंट्री को. इंडिया इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर इन आईटी एंड आईटीईएस सर्विस. आईटीईएस रे आसुच तुमर बीपीओ जानते जोटा बीपीओ सर्विस आसे आईटीईएस, ये सब हम एक्सपोर्ट करछे. नाउ क्लियर व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग टू फॉरेन कंट्रीज. एनी अदर प्रोडक्ट आउ कई किछि प्रोडक्ट कहि परिबे जोगुडा हम एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट करछे फॉरेन कंट्री. आउ किछि प्रोडक्ट रो ना कहि परिबे जा हम एक्सपोर्ट करछे. तले ये गला एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहिले हम त कहले दैट इज कॉल्ड एज कोन कहले ताको, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल सेक्टर हैला, ताको कहले एक्सटर्नल सेक्टर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा, नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा. systematic record of all the economic transactions. All transaction means government transaction एवं private transaction. कौन कहले all transaction means government and private transaction. तार systematic record को हमें कहूचे कौन ना, that is called balance of payment. कौन कहली, that is called BOP और balance of payment. आपको कहते double entry bookkeeping. double entry अर्थ गोटे साइड रे क्रेडिट आ गोटे साइड रे हबो कोन ना डेबिट. इन वन साइड क्रेडिट एंड इन अनदर साइड, वन साइड क्रेडिट अनदर साइड डेबिट हेले ताको डबल एंट्री बुककीपिंग. अकाउंटिंग पिला माने ये टर्म सुनिथिबे व्हाट इज डबल एंट्री बुककीपिंग. गोटे एग्जांपल दोछि, लेट्स से मार्केट को किछि प्रोडक्ट किनिया पे एवं 500 रुपीस रो प्रोडक्ट किनि, ताले ये 500 रुपीस कोन हला मो अकाउंट रो डेबिट हे गला. बट ये 500 टंका बदल रे मो अकाउंट को किछि क्रेडिट तो होइछि ना. तो some products they are credited to my account. That was a double entry bookkeeping. One entry for credit, one entry for credit and another entry for debit.
बुझी पारिले ना ना डबल एंट्री कौन सो डबल एंट्री बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट वन एंट्री फॉर क्रेडिट एंड अनदर एंट्री फॉर डेबिट then तो कहते डबल एंट्री बुक कीपिंग एबे हम आसे now it is all about current account and capital account your foreign trade or external trade that is all about current account and capital account current account कौन by external transaction को जहां भी हमारा external transaction हो with the foreign countries that can be classified into two types one is your current account another one is your capital account now current account transaction कौन ना जो गुड़ा का single time तक जो current account transaction which are one way transaction these are one way transaction so receipts or payment that happens only once for example मु गोटे एक्सपोर्टर फॉरेन को एक्सपोर्ट कली लेट्स से मैंगो एक्सपोर्ट कला परे मते मोर पेमेंट मिल गला नाउ वंस आई रिसीव द पेमेंट नाउ ट्रांजैक्शन स्टॉप्स कोन कहली वंस आई रिसीव द पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टॉप्स ट्रांजैक्शन एटी बंद हो जाउची सो व्हेन अ पर्सन एक्सपोर्ट्स गुड्स ही गिव्स गुड्स एंड रिसीव्स मनी so transaction come to an end now this is called current account transaction बुझिला what is current account transaction now current account transaction में हमें चारटा जिनस पढ़िबा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस एवं इनविजिबल कोन कहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल एक्सपोर्ट कोन एक्सपोर्ट कोन ना मर्चेंडाइज गुड्स कोन कहली मर्चेंडाइज्ड गुड्स जेतोळ ए गुड्स गुडा को हमें फॉरेन कंट्री को पठाउछे ताको हमें कहूचे एक्सपोर्ट इंडिया रु फॉरेन कंट्री को पठेले हमें ताको कहूचे कोन ना एक्सपोर्ट सो एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री मन रखिबे एटी कोन हला एटी इट इंक्लूड्स फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन हैला नाउ इंपोर्ट कोन इंडिया को आणुचे सेम गुड्स आणुचे कोडी ना इंडिया को टू इंडिया कोडी ना फ्रॉम फॉरेन कंट्री इंपोर्ट नाउ ट्रेड बैलेंस कोन ये ओनली गुड्स ये दीटार मन रखियो ओनली गुड्स सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रे ये दीटार कोन है ना ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड नॉट सर्विसेज ओनली गुड्स लिखि के रखो नॉट सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड now trade balance कहले कोन बुझुचे ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू ट्रेड बैलेंस बुझिला एक्सपोर्ट रु इंपोर्ट को माइनस कर देले ताको हम कहले दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहला दैट इज इनविजिबल नाउ गुड्स को तो हम एठी कवर कर देले एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे नाउ जो गुडा को सर्विसेज रहि गेले से सर्विसेज गुडा को हम का अंडर रे रखते ताको हम रखुचे इनविजिबल अंडर now why because services are not visible now economy all the commodities they are classified into two parts goods and services goods are tangible goods are visible which you can touch pen you can touch so pen is a goods now service is intangible which you cannot touch only you can feel for example the teaching of a teacher advice of a doctor advice of a lawyer now these are services now India is a good player in case of services when it comes to external trade now there are a lot of service products that we export to foreign countries kon export kurche na IT and ITS products ITS रे कोना BPO सर्विस KPO knowledge process outsourcing service LPO legal process outsourcing service ये सब गुडा हम कोन kurche ना foreign country को export kurche बुझी पारले मो कथा ना करंट अकाउंट पार्ट क्लियर ना कहा को डाउट रहला मते कोन करंट अकाउंट पार्ट क्लियर समस्त को मु भाबुची समस्त बुझितिबे किछि नाही एते क्लियर ओके ताले करंट अकाउंट हम बुझी गले ता माने एक्सटर्नल सेक्टर रो गोटे पार्ट ओवर गोटे पार्ट बुझी गले आ गोटे पार्ट पछा हां अच्छा जो ट्रेड बैलेंस हमें देखिले ट्रेड बैलेंस कोन एक्सपोर्ट रिसीट माइनस इंपोर्ट रिसीट
एक्सपोर्ट रिसीट माइनस इंपोर्ट पेमेंट आपको माइनस कर देले हमको कोन मिलिबो ना ट्रेड बैलेंस जदि ट्रेड बैलेंस टा पॉजिटिव ताला को कहा जाय कोन ना फेवरेबल एवं जदि ट्रेड बैलेंस टा नेगेटिव ताल दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल फॉर्मल देन दिस इज कॉल्ड गोटेला पॉजिटिव हेले फेवरेबल आ गोटेला नेगेटिव हेले कोन अनफेवरेबल इनविजिबल कहली सर्विस इनकम आउ ट्रांसफर सो करंट अकाउंट बैलेंस केमती बाहरे ना करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल कौन कहली ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट बैलेंस तब अच्छा कैपिटल अकाउंट ना कैपिटल अकाउंट रे कोन होय ना कैपिटल अकाउंट इट इज अ टू वे ट्रांजैक्शन कौन कहली दिस इज अ टू वे ट्रांजैक्शन so two way transaction it कोन paid money comes through periodical income paid money केमती आछे paid money comes through periodical income ये periodical income रे आछे so periodical interest to foreign countries माने करो लोन नै जा लोन नेला पर इंटरेस्ट पेमेंट करिवो इंटरेस्ट पेमेंट केबे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एवरी मंथ हो कि नै इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एवरी मंथ प्रत्येक मास रे बा वर्ष रे जेमिति मोर इंटरेस्ट पेमेंट थियो करिवो सो एटा कंटीन्यूअस ट्रांजैक्शन है this is not one way transaction this is a two way transaction or this is a two way transaction all the two way transactions they come under a capital account they are mentioned in coding and they are mentioned in capital account बुझिला okay capital account part बुझिले ना नहीं काकू डाउट होते मते कैपिटल अकाउंट पार्ट बुझीला समस्त को एवरीवन क्लियर बिट बाय बिट जाउचे आमे स्लो स्लो जाउचे तो आई एक्सपेक्ट समस्त बुझछन सब ओके नेक्स्ट आसे कैपिटल अकाउंट अंडर कोन आछी ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफिशियल और बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन्स ट्रांजैक्शन ऑफ कोन कहले ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफिशियल लोन माने को लोन आछी ऑफिशियल लोन ना बायलैटरल लोन मल्टीलैटरल लोन बायलैटरल मींस कोट आनी ना फ्रॉम वन कंट्री मानकर एग्जांपल नबा हमें आनी यूएसए टू इंडिया है मल्टीलैटरल लोन्स फ्रॉम मल्टीलैटरल बोले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बुझिला कोड कहले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ये सब गेले कोन ना मल्टीलैटरल बोली तो ये गला गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन जोटा देखिलो एटी फर्स्ट रे दिस इज ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा है ना this is only government transaction now आउट देखियो हमें कोन ना प्राइवेट सेक्टर ट्रांजैक्शन आउट के प्राइवेट सेक्टर ट्रांजैक्शन लोन ट्रांजैक्शन बाय कमर्शियल एंटरप्राइज दिस इज बाय द प्राइवेट सेक्टर by the private sector actually external commercial borrowings this is known as external commercial borrowings so एटी हम आउट बैंक लोन्स बायर्स क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट ये सब आसबे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग by ECB under now second part वाला third part is reserve now reserve is very important reserve concept पूछवा दरकार बहुत और ये many times it comes as a question so reserve तो अर्थ होची foreign exchange reserve कोन कहली foreign exchange reserve हमें पढ़िले ऑलरेडी बीओपी कोन बैलेंस ऑफ पेमेंट कोन व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस कोन कहल दिस इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस सो ई जो बैलेंस देखुते जेतले ये बैलेंस ता पॉजिटिव हे जिवो ताले एटा फॉरेन एक्सचेंज रे ऐड हे जिवो ताले नेगेटिव हे जिवो सेटा माइनस हे जिवो
कौन कहली पॉजिटिव हो गले एटा फॉरेन एक्सचेंज रे ऐड हे जे नेगेटिव हो गले कौन हम ना एटा माइनस हो जे बुझ पाले सब इंपोर्टेंट पॉइंट आउथरे कहू लेट्स से मो पाखे घरे गोटे बॉक्स अच्छी जो बॉक्स रे किछि टंका अछि प्रत्येक दिन मो बाहर को गली आसिला बेल को जति इनकम होइतिबो मोर जदि इनकम होई ताल सेतरे ऐड कर देबी जदि इनकम न होइतिबो मोर अलगा खर्च होइतिबो ताले मो सेतरो माइनस कर देबी सिंपल जिंस एठी एक्जाक्टली सेम जिंस होउची जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखुचे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे यदि एक्स्ट्रा टंका अछि ताले ऐड कर दोचे यदि एक्स्ट्रा टंका नाही ताले हम एठी ताको माइनस कर दोचे तो बैलेंस इज एडेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द बीओपी सरप्लस डिडक्टेड इफ इट इज नेगेटिव if it is negative ताले ताको कोन करछ ना डिडक्ट कर दोचे बुझिला तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखुचे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे कोन अछि ना इट कंसिस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई एसडीआर ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व ट्रेंच ये चारिटा को मिसिले हमें कहूचे कोन ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपोर्टेंट ये आस्तले यूपीएससी प्रीलिम्स रे क्वेश्चन कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भीतर को फैक्टर आसन these are the factors which come under foreign exchange reserve foreign currency asset gold stock of RBI SDR of government and reserve trends now what is foreign currency asset हम पाखे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी एथरे कौन थाए एथरे हमें डिफरेंट कंट्री मानकर करेंसी को रखुଛୁ कौन कहली करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज दे आर हेल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन कहली करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज दे आर हेल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो याकू आइदर यू कैन एक्सप्रेस इट इन यूएस डॉलर और इन इंडियन रूपी कौन कहली आइदर इन यूएस डॉलर और इन इंडियन रूपी है ना then आउ कोन अछि ना या व्यतीत अपार्ट फ्रॉम करेंसी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई विथ फॉरेन सेंट्रल बैंक no RBI रे जहाँ डिपोजिट अच्छी कौन ना विथ फॉरेन सेंट्रल बैंक विथ अदर फॉरेन सेंट्रल बैंक इन RBI इज द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया RBI इज द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया no ये कौन कहूची ना ये कहूची कि डिपोजिट हेल्ड बाय RBI विथ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स है ना तब हम कहले फॉरेन करेंसी एसेट नाउ फॉरेन करेंसी एसेट क्लियर ना डाउट बुझिला कि नहीं नेक्स्ट आसिया में फॉरेन एक्सचेंज नेक्स्ट पॉइंट को आसिया फॉरेन एक्सचेंज नाउ फॉरेन एक्सचेंज कौन फर्स्ट देखो एक्सचेंज रेट हम देखते ना $1 लेट्स से इज इक्वल्स टू 80 रुपीस और 82 रुपीस now the rate at which it is exchanged domestic currency को हमें मेजर करूचे in terms of foreign currency domestic currency को this is measured in foreign currency है ना तक हम कहते एक्सचेंज रेट बुझिगला एक्सचेंज रेट कौन बहुत सिंपल नाउ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन एटा टे बुझिए मन दे कौन कहल डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन it let's say $1 equals to 80 rupees 80 rupees $1 equals to 80 rupees now $1 रो वैल्यू को हमें रिड्यूस कले कर देले मन करो this is let's say 85 rupees तान वैल्यू कमी गला रुपीस टा एठी वीक होची ना स्ट्रांग होची मते कोन $1 equals to 85 rupees कोन कहले $1 equals to 85 rupees रुपीस टा एठी स्ट्रांग होची ना वीक होची रुपीस टा एठी वीक होची ना वैल्यू बढ़ुची तार डॉलर रो वैल्यू बढ़ुची केमते बढ़िला ना आगरु 80 टंका रे $1 एबे 85 रे तन रुपीस एठी वीक हला एकवेला में डेप्रिसिएशन यदि यार ठीक उल्टा हुई $1 is equals to 75 rupees then here rupee becomes more stronger strong rupee बुझिला अब कोन कहला हम कहला को स्ट्रांग rupee is clear depreciation and appreciation part clear depreciation and appreciation part clear नहीं
नाउ नेक्स्ट आउ गोटे कांसेप्ट को डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। अच्छा ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन केमिति हुए को हिसाब रे ना ये दुटा हुए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फोर्स केमिति हुए ना दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्स सो डिमांड और सप्लाई ऊपर बेस करके होता है डिमांड एंड सप्लाई ऊपर ये बेस करके हुए मार्केट रे गोटे करेन्सी डिमांड केते एवं सप्लाई नाउ डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कोन ना ये सेम कथा डिवैल्यूएशन ने हमें रुपी रो वैल्यू को रिड्यूस कर दोचे रुपी रो वैल्यू को कोन करछे एठी रिड्यूस करछे एठी कोन करछे ना रुपीस रो वैल्यू को इंक्रीज करछे रिवैल्यूएशन ना एटा किए करछे ना दिस इज बाय गवर्नमेंट दिस इज बाय गवर्नमेंट एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करछि गवर्नमेंट कहीं इंटरफेयर करि करछि डेलिबरेटली इट इज डन बाय द गवर्नमेंट deliberately it is done by the government to promote export import facility कौन करिया पय एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़िया पय उदाहरण दिखवा डिवैल्यूएशन नो कंडीशन नबा में लेट्स से $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीस सही समय रे यूएसए रो गोटे इंपोर्टर इंडिया रो पेन इंपोर्ट करूची पेन रो प्राइस केते ना पेन रो प्राइस होची 10 रुपीस पर पेन ताल से $1 रे केतरा पेन नबो ना 8टा पेन नबो 8 पेन्स सिंपल कथा ना हम गोटे पॉइंट देखिवा जोटी डॉलर रो वैल्यू को रिड्यूस कर दिया गला $1 इक्वल्स टू लेट्स से कले 90 रुपीस आ गोटे जगह रे डॉलर रो वैल्यू को सॉरी रुपीस रो वैल्यू को स्ट्रेंथन करी करा गला $1 इक्वल्स टू 70 रुपीस एठी कोन हला एठी डिवैल्यूएशन हला वैल्यू कम होच 80 टंका थिला 90 टंका कले सो दिस इज द कंडीशन ऑफ devaluation and this is the condition of एठी बढ़ुची revaluation devaluation जेतेबेले हला से $1 केतेटा पेन नबो ना 9 पेन केतेटा पेन 9 पेन्स एठी केतेटा revaluation नबो ना 7 पेन्स तो वैल्यू बढ़ी गला केते 7 पेन्स बुझिला मो कथा आउथरे कहूची $1 is equals to 80 rupees से समय यूएसए रो गोटे इंपोर्टर अछि जो यूएसए इंपोर्टर इंपोर्ट करछि पेन केते ना 10 रुपीस पर पेन केते 10 रुपीस पर पेन ना $1 रो वैल्यू थिला 90 रुपीस एवं $1 थिला 70 रुपीस ना 90 रुपीस को रिड्यूस करा गला $1 रो वैल्यू कहली 90 रुपीस को 90 रुपीस माने 80 टंका थिला एबे 90 टंका ता माने डिवैल्यूएशन हला ना एटी से 9 टा पेन किनिबो आगुर केतेरा 8 टा किनुथिला ना रिवैल्यूएशन ने केतेरा पेन किनिबो रिवैल्यूएशन ने किनिबो 7 टा पेन केतेरा एटी रिवैल्यूएशन ने किनिबो 7 टा पेन बुझिला कि नाही मो कथा कोन इज दिस क्लियर ताले डिवैल्यूएशन हेले एक्सपोर्ट बढ़ुची ना नाही क्वेश्चन हो डिवैल्यूएशन हेले एक्सपोर्ट बढ़ुची ना नाही यस डिवैल्यूएशन पछरे कारण कोन ना टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ना रिवैल्यूएशन ने कोन होची ना एटी एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाउची एटी कहली कोन होची ना एटी एक्सपोर्ट कमी जाउची export is reduced but a difference खाली मन रखिबे कि this two depreciation appreciation by market force devaluation revaluation by government this is by market force बुझिला now I think it is clear no STR कुछ भी नहीं यदि या भीतर किसी डाउट रहला ए पॉइंट जो पॉइंट डिस्कस कली ता भीतर यदि किसी डाउट रहला तल any doubt on this point any doubt on this point
नेक्स्ट आउ गोटे कॉन्सेप्ट देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनदर इजी टॉपिक मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन कहली एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई कौन ना इन्वेस्टमेंट अदर देन स्टॉक एक्सचेंज that was FDI. Now portfolio investment under कौन आसुची नटी आसुची ऑफशोर फंड ना ऑफशोर फंड कहले हम कौन बुझे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट किछि डेस्टिनेशन अछन जोडा लो टैक्स बा नो टैक्स कंट्रीज लो टैक्स बा नो टैक्स कंट्रीज सेठी इन्वेस्टमेंट गुडा को हम कहउछ ऑफशोर फंड बुझिला ऑफशोर फंड कोन आ गोटेला फाइनेंशियल एफआईआई एफडीआई गोटेला एफडीआई एट लिखले तो कोन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेम वे एफआईआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बुझिला now this is investment by mutual funds insurance company mutual fund insurance company एमाना को द्वारा इन्वेस्टमेंट हम कहले कोन ना एफआईआई and the third one is depository receipt third one is depository receipt now what is the depository receipt कहले हम कोन बुझे माने कर गोटे इंडियन कंपनी लेट्स से टाटा कंपनी ये गला फॉरेन यूएसए रो कैपिटल मार्केट गला हैला कोन में शेयर बिक्री करिया पे कोन पे शेयर बिक्री करिया पे तो डायरेक्ट बिक्री करिवोनी ये का जो सिटीजन को बिक्री करियो या भीतर के रहिला एंको मझिरे के रहिला एंको मझिरे रहिला गोटे बैंक कस्टोडियन बैंक कोन दियो ये बैंक कोन करिवो ना गोटे रिसीट दबो का ऑन बिहाफ ऑफ टाटा कंपनी येला इन्वेस्टर को ऑन बिहाफ ऑफ टाटा कंपनी ये कौन करो ना गोटे रिसीट दबो एवं जो रिसीट दबो ये रिसीट रे मेंशन हबो नंबर ऑफ शेयर केते शेयर रो प्राइस केते ई सब मेंशन होइतिबो आपको कोन रिसीट बा कोन डिपॉजिटरी रिसीट दिस इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसीट नो ये डिपॉजिटरी रिसीट ता जेतेबेले रेज करा जाय इन अमेरिकन मार्केट according ADR American Depository Receipt. When it is raised in Indian market, this is called Indian Depository Receipt. When it is raised in the global market, this is called GDR Global Depository Receipt. बुझिला Depository Receipt कौन Depository Receipt clear ठीक है चला आज अनेक गुड इंपोर्टेंट पॉइंट कहली I hope it is clear to everyone समस्त बुझिले यदि डाउट अछि ताले पचारन न केतरा छोट छोट क्वेश्चन पचारछि मते खाली कहि दे current account a one way na two way transaction current account transaction is one way or two way. Now this is just we are refreshing some important concepts of economics that we have already discussed in the same session. जो 9 और 10 सेशन हमर आगु रहितला सेम टाइप ऑफ अनेक गुडे टॉपिक हमें पढिचे current account a one way na two way transaction समस्त कहि पारे current account is one way transaction. Now capital account is one way or two way transaction. Capital account is two way transaction. हाँ कि नहीं कैपिटल अकाउंट कौन कैपिटल अकाउंट इज टू वे ट्रांजैक्शन बुझ पाले मो कथा करंट अकाउंट अंडर कौन आसिला को फैक्टर आसिले एटी करंट अकाउंट अंडर
करेंट अकाउंट अंडर एठी को फैक्टर आसला चारिटा फैक्टर ऊपर एठी डिस्कस कली मार्क करियो चारिटा इंपोर्टेंट फैक्टर ऊपर डिस्कस कली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस आउला इनविजिबल एक्सपोर्ट कोन मर्चेंडाइज्ड गुड्स जोटा हम फॉरेन कंट्री को पठाउचे इंपोर्ट कोन मर्चेंडाइज्ड गुड्स जोटा हम फॉरेन कंट्री रु इंडिया को आणुचे ट्रेड बैलेंस कोन ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस इनविजिबल ले कोन रखिले हमें ना इनविजिबल हमें रखिले सर्विस कोन रखिले इनविजिबल सर्विस केते सिंपल देखो मैं सब गुड़ा को मिसी गले हमको मिलला करेंट अकाउंट बैलेंस सो ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल इज इक्वल्स टू करेंट अकाउंट बैलेंस नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट रे कोन आसे ना ऑल द टू वे ट्रांजैक्शंस दे कम अंडर द कैपिटल अकाउंट सो एठी कोन होय ना एठी पेड मनी इज रिकवर्ड थ्रू पीरियडिकल इनकम मे बी पीरियडिकल इंटरेस्ट टू फॉरेन कंट्री गोटेला दीटा पॉइंट इट इंपोर्टेंट आ गोटेला एक्सटर्नल असिस्टेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक्सटर्नल असिस्टेंस इज द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफिशियल बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन्स बायलैटरल माने गोटे कंट्री ठू आनिले बायलैटरल अनेक गुडे कंट्री ठू आनि मल्टीपल कंट्री ठू आनिले कोन हला एटा ना मल्टीलैटरल लोन्स बुझियो कोन कहली मल्टीपल कंट्री ठू आनिले मल्टीलैटरल नाउ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कोन ईसीबी कोन No, this is the loan by the commercial enterprise, not by the government. It is by commercial enterprise. Clear? Now, reserve रे कौन asset ना foreign currency asset, gold stock of RBI, SDR of government and reserve trends. ये सब मिसी के asset कोथरे ना foreign reserve. Depository receipt कौन कहली? Foreign currency asset कहली. नाउ एठी एक्सचेंज रेट है जो रेट हम एक्सचेंज करूचे डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी सहित नाउ डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सेम डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन इट इज बेस्ड ऑन नाउ इट इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट डिसीजंस कहा जा इट इज बाय द गवर्नमेंट डिसीजंस नाउ व्हाई डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन टू इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपोर्ट को इंक्रीज डिक्रीज करिया पय डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करा जाय नाउ व्हाई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन इट इज नॉट डेलिबरेटली डन आको कहीं करंती रादर ये मार्केट फोर्स अनुसार हेई थाए ऑटोमेटिकली हेई थाए बुझी गला समस्त को ओके ठीक अछि ताले एति पढ़ी के आसन ताले आउ जा अछि नेक्स्ट क्लास देखिबा आज कोन देखिले हमें एक्सटर्नल सेक्टर जानिले हमें एक्सपोर्ट कौन इंपोर्ट कौन ट्रेड बैलेंस कौन सिखिल नेट इनविजिबल कौन जानल नेट इनविजिबल कौन जानले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन जानले करेंट अकाउंट जानिले कैपिटल अकाउंट कौन जानले हाँ कि नहीं है ना तो नाउ शिखिले कौन ना एक्सचेंज रेट कौन देखिले डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन बुझेला डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन आउ appreciation depreciation है this is the summary of this class ठीक अच्छे so let's wind up ଆଉ ଯା ଅଛି ଆମେ next class ରେ ଦେଖିବା आसना काल क्लास रे आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आनिबी नेशनल इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलेटेड टॉपिक now once it is done almost all important topics economics ए वर्ष प्रीलिम्स पे मैं कवर कली तापर आनिबी कोन एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू स्टार्ट करबा हमें ए सेशन ठीक अछि चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू